resettlement colony here in New Delhi. Most of the people in this locality belong to the low-income strata. 5 years ago, NIT together with the Delhi government set up these 5 learning stations or kiosks in this locality. The idea was to provide free access to computers to the children of this locality. By free, I mean not just in terms of the cost, but also free from the confines of a classroom. Today, the project is implemented and is being expanded by NIT subsidiary Hole in the Wall. Manas Chakravarti here is with me from Hole in the Wall. Manas, why was this idea about, how did the idea of setting up a kiosk without the confines of the classroom come about, and what was the inspiration behind it? There were 2 things actually. The first was that we were looking for a method by which we could reach out education to a very large number of children without the cost associated with it, with traditional methods. That was one of the reasons why we started a project like this. The second was that the principal scientist of NIT, Dr. Sugata Mitra, when he had an idea that children can learn on their own and they can teach each other. This is CNN. Next door to our office in New Delhi, as is very usual in India, there is a slum, and the slum and the office are divided by a wall. Sugata Mitra is a researcher for NIT, a software and education company. He did an experiment to see how quickly slum children who had never touched a computer could become net savvy. I made literally a hole in the wall, a rectangular hole, and I put a Pentium into it, so that from the slum side of the wall, you could see the screen and you could see the touchpad. And I just turned it on and did nothing else. And I stood at a distance and watched what would happen. So that was the reason it was initially set up as a research project. I mean, over the years we've collected a lot of data on what it does. We've got a lot of evidence, not just on education and computer literacy, but also on how it changes behavior in the children, how they perceive computers, how their aspirations change. So it has, I think, far-reaching effects beyond literacy, just plain literacy. जब से कंप्यूटर बना हम जब से आ रहे हैं यहाँ पे। मैं 5 महीने से यहाँ पर आ रहा हूँ और मेरा दोस्त भी आता है मेरे साथ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर रोज़ तो नहीं, हफ्ते में शायद 3 बार या 4 बार आती हूँ। मैथ आता है, साइंस भी आता है, हिंदी आता है, बहुत कुछ आता है इसमें। शब्द निकालना है, जैसे कुछ शब्द आते नहीं है वो सीखता हूँ, और गणित में क्षेत्रफल निकालना। और यहाँ से हम सीख के स्कूल में भी जब कुछ टीचर वगैरह पूछते हैं तो वो भी अच्छा ही पूछते हैं, कहते हैं कि बेटा आपने कहाँ से सीखा, तो यही बोलते हैं कि हम अपने दक्षिणपुरी में हमारे कंप्यूटर लगा हुआ है तो हम वहाँ पे से सीखते हैं। हमारे रेसेस होते हैं, चाहे वो 10 मिनट का हो या 25 मिनट्स का हो, बेल होते ही बच्चे वहाँ पे दौड़ते हुए जाते हैं। कोई चेंज नज़र आया कुछ? यस, बहुत सारा चेंज नज़र आया। मुझे चेंज इस प्रकार का नज़र आया, बड़े ध्यान से वो देखते हैं, बड़े कॉन्सेंट्रेशन से वो कंप्यूटर की तरफ देखते हैं, और ज्ञान जो मैंने जो कुछ पढ़ाया है, जो ज्ञान हम देते हैं, जो कुछ पढ़ाते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े इंटरेस्ट से वो सुनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करने की मनस्थिति में रहती है। बिहेवियर अच्छी रहती है, वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, गड़बड़ नहीं करते, चिल्लाते नहीं हैं, उनके पढ़ने में या एकाग्रता कंसंट्रेशन रहता है। इंथुजियाज्म क्रिएट हुआ, उत्साह निर्माण हुआ, बच्चे एक दूसरे के साथ कंप्यूटर पे बैठने लगे, एक दूसरे को हेल्पिंग नेचर होने लगा,
वही भावना हमको स्कूल में भी देखने मिली। जब कभी वो साथ में मिलकर कोई काम जैसा सुपुर्द किया जाता है उन्हें, तो बच्चे मिलजुल कर करा लेते हैं। बच्चों में एक क्वालिटी ऐसी हुई कि अंग्रेजी के विषय के बारे में अगर बताया जाए तो जो वर्ड्स उन्हें खाली हम पीरियड भर में पढ़ाते थे, उसके बाद में तो वह भूल भी जाते थे। जब कहीं भी उनको टाइम मिला तो वो पढ़ते थे घर पे या नहीं पढ़ते थे। तो उसका बेनिफिट ऐसा हुआ कि जब वो इंटरनेट पे या अपने कंप्यूटर पे बैठने लगे तो उनको एक्स्ट्रा जानकारी मिलने लगी, नई नई वर्ड्स उन्हें सीखने को मिले, कि उनके मन में अंग्रेजी के प्रति जो डर था वो डर कम होके उनमें एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलने लगी। अच्छा है बच्चों के लिए, अच्छी शिक्षा मिल रही है बच्चों को, इससे कोई गलत चीज़ की वो नहीं हो रहा। यहाँ पे टाइम बिता के जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, गणित वगैरह का जो आता है ना वो करते हैं, गेम भी खेल लेते हैं। सब अच्छे करते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब बताते हैं वो सब सीखते हैं अच्छा, और उनका मतलब पेपर वगैरह भी देते हैं इनसे, अच्छा मतलब वो सिखाते हैं।